In this one, we are covering the things from the Hemmant Somani sir PDF. So let's get started. Alright, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है exactly? First, starting with the appointment and qualification of director. Appointment and qualification of director में सबसे first में क्या है? Following classes of company जो है appoint करेगी at least one women director को. Every listed company और every other public company जिसकी paid up share capital 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और टर्नओवर जो है 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो. पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो. तो हम क्या बोलते हैं? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल अपॉइंट करेगी एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर. सारी की सारी लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो. उसके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है, where the article of association does not mention anything related to first director, the subscriber to the memorandum of association who are individually only will become the first director. फर्स्ट डायरेक्टर के लिए हम क्या बोलते हैं? दैट वेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट मेंशन एनीथिंग रिलेटेड टू फर्स्ट डायरेक्टर. जहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेंशन ना करे एनीथिंग अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर रिलेटेड टू फर्स्ट डायरेक्टर, तो जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु आर इंडिविजुअल ओनली, वो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम जो है इंडिविजुअल, वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे. उसके बाद आता है हमारा कैजुअल वैकेंसी के बारे में. कैजुअल वैकेंसी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी द कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर? It shall be filed up by the board at least but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later. कैसे फाइल होगी कैजुअल वैकेंसी वुमेन डायरेक्टर वाले केस में? या तो इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग या फिर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जब से वो वैकेंसी हुई है, या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी whichever is later. And intermittent कैजुअल वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर अरोज अगर 15 जून को हुई है ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ मिस स्वाति, तो कैसे आप कर सकते हो? या तो 15 जून से 3 महीने गिन लो, 15 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर, तो इट में भी या तो 15 सितंबर के आसपास आएगा या फिर अक्टूबर में हुई मीटिंग, तो विच एवर इज लेटर, तो डेट क्या होगी? अक्टूबर 10. उसके बाद आता है हमारा दैट नंबर फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज वैलिड व्हेन सर्व्ड बाय लोअर ऑफ 1000 शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर. जो भी नोटिस होगा फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज वैलिड व्हेन सर्व्ड बाय लोअर ऑफ, जो नोटिस होगा फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो कब वैलिड होगा? व्हेन सर्व्ड बाय द लोअर ऑफ 1000 शेयर होल्डर और 1/10 शेयर होल्डर. तो हम क्या बोलते हैं? दैट the notice for small shareholder director is valid. जो नोटिस होगा फॉर स्मॉल शेयर होल्डर दैट द सेम इज वैलिड व्हेन सर्व्ड बाय द लोअर ऑफ 1000 शेयर होल्डर और 1/10 शेयर होल्डर. तो हाउ देयर विल बी द थिंग्स? नोटिस फॉर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज वैलिड व्हेन सर्व्ड बाय लोअर ऑफ, जो नोटिस होगा फॉर स्मॉल शेयर होल्डर दैट द सेम इज टू बी सर्व्ड by lower of 1000 shareholders and 1/10 shareholders. A director is not empowered to appoint an alternative director. For him, power to appoint alternative director rests with board and needs empowerment via the article of association. The original director has no power to appoint the alternate director. A director is not empowered to appoint an alternate director. एक director जो है that the same is वो उसको empowered नहीं है कि वो अपॉइंट करे ऑल्टरनेट डायरेक्टर. फॉर हिम पावर टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर वेस्ट विद बोर्ड एंड नीड्स एम्पावरमेंट वाया द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसके पास कोई पावर नहीं है टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर. अ डायरेक्टर इज नॉट एम्पावर टू अपॉइंट एन, एक डायरेक्टर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले. उसके लिए हिम पावर टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर दे दे वेस्ट विद द बोर्ड नीड्स एम्पावरमेंट चाहिए उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से. तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है टू अपॉइंट दी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले. उसके बाद आता है हमारा रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर इज इफेक्टिव फ्रॉम. जो रेजिग्नेशन है डायरेक्टर का वो इफेक्टिव होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व्ड बाय द कंपनी ऑन डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस इफ एनी व्हिचएवर इज लेटर. हाउ देयर विल बी द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर? कब से इफेक्टिव होता है? डेट ऑन विच नोटिस, जब नोटिस रिसीव होगा बाय द कंपनी और डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस इफ एनी व्हिचएवर इज लेटर, नॉट फ्रॉम द डेट मेंशन इन द
लेटर, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर इज इफेक्टिव फ्रॉम, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर कब से इफेक्टिव होगा, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव बाय द कंपनी, किस डेट से नोटिस रिसीव हुआ और डेट स्पेसिफाई इन दी नोटिस, फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव, कब नोटिस रिसीव हुआ है कंपनी को और डेट स्पेसिफाई इन नोटिस इफ एनी विच एवर इज लेटर, जब से नोटिस रिसीव हुआ है कंपनी को, फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव बाय द कंपनी और डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस, और कौन सी ऐसी डेट है जो कि स्पेसिफाई हुआ है विच एवर इज लेटर नॉट फ्रॉम द डेट मेंशन इन द लेटर। ही सेंट ईमेल ऑन 17 जून को ईमेल भेजा इंक्वायरिंग अबाउट द रिसिप्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन, ईमेल अगर सपोज ईमेल भेजा है 17 जून 2021 को about the receipt of his resignation by the company, but there was no response. However, MGT Mechanics Limited received his resignation letter 18 जून को मिला है इसको, तो सो 18th is the date of resignation. Effective date कब से होगी, जब से not mention not from the mention in letter, date on which notice is received by company और date specified in notice, जिस दिन कंपनी को नोटिस मिला है या फिर डेट स्पेसिफाई हो, whichever is लेटर, विच एवर इज लेटर। उसके बाद पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा टू बी, पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, employee, proprietor, partner in current plus last 3 financial year in a legal consulting firm having a transaction किया है कैश में that is greater than equal to 10% of the gross turnover। हम क्या बोलते हैं, पर्सन जो है that the same is disqualified to be independent director, पर्सन जो है वो disqualify हो जाएगा to be what, to be so called as independent director, पर्सन जो है that the same to be disqualify हो जाएगा to be independent director under section 149 subsection 6, employee, proprietor, partner in current year और last 3 financial year in the legal consulting firm जिसका transaction हो कैश में greater than equal to 10% of the gross turnover। उसके बाद आ रहा है हमारा for appointment of additional director authorization in AOA is mandatory, for appointment of additional director के लिए authorization in the article of association जो है वो mandatory है। A private company that is a subsidiary of public company shall be deemed as public company only, एक private company जो कि subsidiary हो public company की, एक private company जो कि subsidiary हो, private company जो कि subsidiary of public company shall be deemed to be as public company only। अगर suppose हम क्या बोलते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट इन एडिशनल डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट करना है तो आपको एओए से ऑथराइजेशन मैंडेटरी है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसे हम मान लेंगे दैट द सेम शैल बी डीम्ड टू बी एज पब्लिक कंपनी ओनली। जो लिमिट है 15 डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 वो एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी पे और गवर्नमेंट कंपनी पे, मतलब कि प्रोवाइडेड उन्होंने कंप्लायंस किया है, जैसे कि जो लिमिट है 15 डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 वो एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी पे। बाकी किसी भी कंपनी में अगर हमें मैक्सिमम 15 से ज़्यादा करना है, मैक्सिमम 15 तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करना है तो हमें आर्टिकल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। बट जो 15 की लिमिट है वो सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड मतलब उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना होगा, प्रोवाइडेड उन्होंने कंप्लायंस किया सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 92 एनुअल रिटर्न का। उसके बाद आता है 11 पॉइंट, to become a resident director total period shall not be less than 182 days in the current financial year and not the preceding previous year। तो टू बिकम अ रेजिडेंट डायरेक्टर टोटल पीरियड जो है शेल नॉट बी लेस देन 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर के लिए ये वाला केस है, फेमा में तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो टू बिकम अ रेजिडेंट डायरेक्टर के लिए टोटल पीरियड जो है वो 182 डेज है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, जबकि फेमा में तो हम तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देखते हैं। उसके बाद है जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ डायरेक्टर नीड टू बी फाइल्ड बाय द बीओडी। अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है डेथ ऑफ डायरेक्टर की वजह से तो वो जो है फाइल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड देयर इज अ नो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है। लो ओनली मेंशन दैट सच वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय द बीओडी एट अ बीओडी मीटिंग, बस ये बता रहा है कि बीओडी
का जो फाइल हो जाना चाहिए वापस एट अ बीओडी मीटिंग एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और अप्रूव हो जाना चाहिए बाय द सब्सिक्वेंटली अप्रूव हो जाना चाहिए बाय द मेंबर इन द इमीडिएट जनरल मीटिंग के अंदर। उसके बाद फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शेल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, जो है अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सारी लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पीडअप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो दे शुड हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। पेनल्टी है फॉर नॉट वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इवन आफ्टर अट्रैक्टिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। तो वो फाइन है हमारा 1,100,000 लाख, 1 लाख और 5 लाख रुपए। 1 लाख से 5 लाख रुपए, 1 लाख से 5 लाख रुपए का हमारा फाइन है। इन ऑर्डर कॉलिंग ऑफ द ऑफ दैट दी ट्रिब्यूनल जो है वो में डिस्पेंस कर सकता है विद द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। इट इज रिक्वायर्ड दैट द क्रेडिटर हैविंग वैल्यू ऑफ 90% मस्ट एग्री एंड कंफर्म टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इन ऑर्डर कॉलिंग ऑफ डेट दी ट्रिब्यूनल जो है मैं डिस्पेंस कर सकता है विद द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। इट इज रिक्वायर्ड दैट क्रेडिटर हैविंग द वैल्यू ऑफ मिनिमम, अगर क्रेडिटर की हैविंग द वैल्यू ऑफ मिनिमम 90% मस्ट एग्री करे एंड कंफर्म करे टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर calling of debt, the tribunal may dispense with the meeting of the creditor. It is required that creditor having value of minimum होनी चाहिए 90% must agree and confirm the scheme of compromise. As per section 165, क्या बोलता है, no person shall hold the office of director including the alternative director in more than 20 companies at the same time. As per section 165 बोलता है कि no person shall hold, ना करे director including the alternative director in more than 20 companies में at the same time, provided that maximum number of public company in which the person can be director shall not exceed, नहीं होना चाहिए 10, director shall not exceed 10। for reckoning limit है 20 companies, directorship in dormant company shall not included। एज पर सेक्शन 165 बोलता है, एज पर सेक्शन हम क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 165 नो पर्सन शेल होल्ड, एज पर सेक्शन 165 नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस नहीं करेगा ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग दी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। एज पर सेक्शन 165 कोई भी पर्सन जो है नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस होल्ड नहीं करेगा डायरेक्टर का, नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग द ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनी, 20 कंपनी से ज्यादा एट द सेम टाइम, प्रोवाइडेड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन अ डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड 10। For reckoning limit of 20 company, directorship in dormant company shall not be included. As per section 165 no person shall hold office नहीं करेगा director including the alternative director in more than 20 companies at the same time, provided जो maximum number होगा public company का in which a person can a director that shall not exceed 10। For reckoning limit of 20 directorship in dormant company shall not be included। Mr. Z is proposed to be appointed as a director in RLP Mechanics Limited. It is noteworthy that Mr. Z already hold directorship in one dormant company, 2 Section 8 companies, 8 public limited companies and 9 private companies, limited companies. However, out of 9 private limited companies, 2 or more subsidiary of public companies in the given circumstances, it is possible for Mr. Z to accept another directorship in RLP Mechanics Limited without attracting any invalidity. It is not possible for Mr. Z to accept another directorship in RLP Mechanics Limited since he is already holding the directorships in 8 public limited companies and 2 such private limited companies which are subsidiaries of public company। Mr. Z जो है वो प्रपोज हुआ है that the same is proposed to be appointed as a director in। Mr. Z को प्रपोज किया है कि वो क्या होगा, Mr. Z को प्रपोज किया है कि उसे अपॉइंट किया जाएगा एज अ डायरेक्टर इन RLP Mechanics Limited में। एंड इट इज नॉट वर्दी दैट मिस्टर जेड ऑलरेडी होल्ड कर रहा है डायरेक्टरशिप इन एक गवर्नमेंट कंपनी में, ऑलरेडी डायरेक्टर है, 2 सेक्शन 8 कंपनीज में भी है, 8 पब्लिक कंपनीज में भी है एंड 9 प्राइवेट लिमिटेड। हाउएवर आउट ऑफ द 9 प्राइवेट कंपनी 2 are subsidiary of public limited company. In the given case, it is possible for Z to accept another directorship in RLP Mechanics without any attracting any, तो it is possible नहीं है Z को accept करना दूसरी directorship in RLP Mechanics Limited since he is already holding कर रहा है directorship in 8 public company में, already 8 public companies में कर रहा है and 2 such private companies में कर रहा है, तो which are subsidiary of public companies, तो ये possible नहीं है।
उसके बाद आ रहा है हमारा फर्स्ट डायरेक्टर. Kutum Micro Limited KL, a newly incorporated company, has not mentioned the names of first director in its article of association. Kutum Agro Limited एक newly incorporated company है जो कि mention नहीं करी है the names of first director in its article of association के अंदर. There are 8 subscribers here to the memorandum of association, including the Parivar Agro Private Limited. Except Parivar Agro Private Limited, all other subscribers to the memorandum of association of KL shall be deemed to be the first director. कुटुम एग्रो लिमिटेड जो है वो एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है. उसने मेंशन नहीं किया द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. देयर आर 8 सब्सक्राइबर है टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूडिंग दिस. एक्सेप्ट परिवार एग्रो लिमिटेड, ऑल अदर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कार shall be deemed to be the first director. Ruby is a women director है in ABC Limited. The company held 4 meetings of the board in the financial year 22-23. But Ruby may remain absent in all such meetings. However, she sought leave of absence in all such meeting and mention the person reason. Based on this fact, which among the following statement is correct? Ruby offices as a director shall become vacant. Sentenced by a court for a period of 1 year, not eligible for appointment as a director in a company. Which among the following, हम क्या बोलते हैं that which among the following is not a disqualification for appointment as a director? Which among the following is not a disqualification for appointment as a director? An order disqualifying him for appointment as a director has been passed by the tribunal. He has been convicted of an offence dealing with related party transaction or any time during the last preceding 5 years. He has not been allotted the DIN. The company in which he had been a director has not filed annual return from the previous year. Which among the following is not a disqualification for appointment? इनमें से कौन सी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट. तो द कंपनी इन विच ही हैड बीन डायरेक्टर हैज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न नहीं किए, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. बाकी की डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर पास बाय द ट्रिब्यूनल बोल रहा है, या कन्विक्टेड है, उसने अपराध किया है और 5 ईयर्स जो है अभी तक पास नहीं हुए, उसे उसे DIN नहीं मिला है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर है द कंपनी विच हैज बीन नॉट फाइल्ड. अगर उसने फाइल नहीं किया है एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. A listed entity, the total number of director in which the company is 10. Out of 10, how much director should be independent director? Listed company में कितने independent director होने चाहिए? अगर टोटल 10 है तो कितने होने चाहिए? That is 4. उसके बाद बोला जा रहा है कि सेवा हॉस्पिटलिटी सर्विस लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड है. सेवा हॉस्पिटलिटी सर्विस लिमिटेड है जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है इन साउथ दिल्ली. प्रोवाइड कर रहा है वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज. मेजर कंपोनेंट ऑफ विच आर टूर्स एंड ट्रेवल्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. In addition to 6 director, Andrei is a resident of this Poland who has also directorship in the company as a foreign director. However, due to his extremely busy schedule at Warsaw, he resigned and requested the company to relieve him from the directorship with effect from 23rd July 2023. With a view to intimate the registrar regarding the resignation of Andrei, the company filed the DR12 file किया 26 July को in respect of signing the filing of DR11. Which of the following person in India can be authorized by Andrej in addition to a practicing chartered accounting, cost accountant in practice and a company secretary in a practice who can sign and file the said form in DR11 in his behalf? His cousin Bartek, residing in India and holding directorship is an unlisted company, namely Mithila Dairy Product Limited. His co-director Kritika, resident director of Seva this and who filed Director 12 on behalf of the company intimating the registrar regarding the resignation of Andrej. Mr. Z is proposed to be appointed as a director in RLT Mechanics Limited. It is not worthy that Mr. Z already holds directorship in 1 government company, 2 Section 8 companies, 8 public companies and 9 private limited companies. However, out of the 9 private limited company, 2 are subsidiary. Already 2 subsidiary public company की in the given scenario, is it possible for Z to accept? The answer is no. It is not possible for Z to accept the another directorship in this since he is already holding directorship in already 8 public companies में वो कर रहा है और 2 private companies में which are subsidiary of public companies.
So maximum number of unlisted public company in which a person can be appointed as a director, that shall not exceed 10. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन एज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, दैट शैल नॉट एक्सीड 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद आ रहा है अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तरफ से अपॉइंट नहीं करा जा सकता फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अभी लिमिटेड, हम क्या बोलते हैं, अभी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो कि प्रपोज कर रही है मिस्टर अरुण एंड मिस्टर राज बिफोर द बोर्ड टू अपॉइंट देम एज अ स्मॉल शेयर होल्डर. Particular about the proposed SSD. Mr. Arun, he holds 50 preferential shares of Abhi Limited, also currently working as a small shareholder director in Sona Limited, which is not competing in a business to Abhi Limited. Mr. Arun, हम क्या बोल रहे हैं, होल्ड कर रहा है 50 preferential shares of Abhi Limited. Also currently working कर रहा है as a small shareholder director in Sona Limited, which is not competing in business to Abhi Limited. Mr. Raj, he is not holding any shares of Abhi Limited. He is currently representing two different companies, one as a director and another as a small shareholder director. Requirement क्या है, हमें examine करना होगा in light of the given fact as per the Companies Act 2013, the correct statement on the validity of proposal of appointment of Mr. Arun and Mr. Raj as a small shareholder director in this. Proposal to appoint Mr. Arun is only valid. He can be appointed as a small shareholder director as he is holding the shares of Abhi Limited through the, though he is SST in Sona Limited. Proposal to appoint Mr. Raj is invalid. He is not eligible to be appointed as a SSD and already he is holding directorship in two different companies and also having no shares in Abhi Limited. Proposal of appointment of Mr. Raj and Arun both is valid as they are eligible to be appointed as SSD in Abhi Limited irrespective of their holding as a small shareholder directorship in one of the company. Proposal of appointment of Mr. Raj and Mr. Arun is invalid as both are ineligible to be appointed as SSD as they are being a director in more than two companies. Then आ जाता है हमारा then comes the managerial remuneration, chapter number 2. तो ये तो comparatively छोटा है. उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द मैनेजरियल रेमुनरेशन. वो किस बारे में बात कर रहा है, दैट इज बेसिकली टॉक्स विद द मैनेजरियल रेमुनरेशन के बारे में बात कर रहा है. मैनेजरियल रेमुनरेशन में क्या होगा, एज पर सेक्शन 199 बोलता है वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस with the provision of this act shall recover करेगा from past, present, managing director, full time director, manager or CEO, not the non executive director, independent director, who during such a period for which the financial statement is restated receive remuneration in excess of what have been payable to him as per the restated financial statement. Even if he is retired, then also recover it. उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर इज entrusted with substantial power, so MD can sign the financial statement but cannot draw check share certificate. What we can do hereby, we are taking a 2-3 minute break, either 2 से 3 minute 2-minute break.
As per section 196, हम क्या बोलते हैं? Now we are back with our break after taking a few minute break. So in this one, as per section 196 क्या बोलता है? No reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of the managing director, whole-time director or manager's term. Section 196 बोलता है कोई भी reappointment नहीं होगा shall be made earlier than 1 year before the expiry of the managing director, whole-time director or the manager's term. So if on June 20, 2019, Mr. Anil Mehra was appointed as a manager, on the date on which his reappointment will be considered valid is June 24. As per section 196, no reappointment shall be made earlier than, कोई भी reappointment नहीं होगा earlier than 1 year before the expiry of the managing director, whole-time director of the manager's term. So if on June 20, 2019, अगर जून 20, 2019 Mr. Anil Mehra को appoint किया as a manager, date on which his reappointment will be considered valid will be the June 24, 2023. If reappointment is in advance as a whole-time director for another term of 5 years in the annual general meeting, it is invalid. If reappointed in advance as a whole-time director for another term of 5 years in the annual general meeting, it is invalid. So remuneration payable होगा to any one managing director, whole-time director or manager that shall not exceed नहीं करेगा, that shall not exceed 5% of the net profit, that shall not exceed 5% of the net profit, and if there is more than one such director, remuneration shall not exceed 10% of the net profit. किसका? Net profit का. Whether I am audible? Net profit of such all the managing director, whole-time director, manager taken together. 5% हम क्या बोलते हैं? One managing director है, whole-time director है, तो it shall not exceed 5%. और अगर एक डायरेक्टर से ज्यादा है तो it is 10%. मिस्टर अभिषेक कैन प्रोसीड, तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर की बात करें, अगर एक है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%. मिस्टर अभिषेक कैन प्रोसीड विद द ऑफर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एट MN लिमिटेड व्हाइल आल्सो कंटिन्यूइंग एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सिंस MNN लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ FNI लिमिटेड. उसके बाद एज पर सेक्शन 196, नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर्स टर्म. However, हम बोलते हैं however reappointment for a period of 1 year under section 196 subsection 2 is not applicable to CFO. For the KMP, board can appoint KMP for any period they seem fit. As per section 203 बोलता है vacancy in office of whole time director KMP to be filed by BOD within 6 months of वैकेंसी. एज पर सेक्शन 203 क्या बोलता है कि जो भी वैकेंसी होगी इन ऑफिस ऑफ होल टाइम की मैनेजरल पर्सोनल दैट द सेम टू बी फाइल्ड बाय बीओडी फाइल करेगा विद इन 6 मंथ ऑफ वैकेंसी, विद इन 6 मंथ ऑफ वैकेंसी. एज पर सेक्शन 203 वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ होल टाइम की मैनेजरल पर्सोनल दैट द सेम इज टू बी फाइल्ड बाय द बीओडी विद इन द 6 months of vacancy. Every whole time key managerial personnel of a company shall be appointed by a board resolution containing the condition of appointment including the remuneration. फिर आ रहा है हमारा श्री हरि was employed as a manager as a KMP throughout the financial year 21-22 in a Unique Logistics Limited, a listed company which connects shipper and transporters Power India carrying and storing any perishable cargo in which the following situation. क्या
So further we are discussing our topic, proceeding with the things. That is, Sri Hari was employed as a manager as a KMP throughout the financial year 21-22. In a Unique Logistics Limited, a listed company which connects shipper and transporter pan-India carrying and storing any perishable cargo in which the following situation his name shall be shown in the board's report. If Sri Hari is in receipt of remuneration for the financial year 21-22 is not less than 1 crore and 2 lakh. The same is not less than 1 crore or 2 lakh. तो हम क्या बोलते हैं, श्री हरि was employed as a manager as a KMP throughout the financial year in Unique Logistics Limited, a listed company which connects shipper and transporters pan India carrying and storing any perishable cargo in which of the following situation his name shall be shown in the board report. If Sri Hari is in receipt of remuneration for the financial year 21-22 not less than 1 crore and 2 lakh. Which among the following companies not required to appoint a company secretary, any company having the paid up share capital not exceeding 10 crore rupee. उसके बाद हम बोल रहे हैं that which among the following is not required to appoint a company secretary को company secretary रखने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी को रखने की जरूरत नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल. Delhi Tourist Limited convened a board meeting and appointed Ripu Daman as an additional director in terms of hours given by the Article of Association. In the same board meeting, he is also appointed as managing director of the company. You are required to choose the correct option from those stated below, keeping in view the given situation. The appointment of the Ripu Daman as managing director of Delhi Tourist Limited in the same board meeting in which he is appointed as an additional director, that the same is valid. उसके बाद आता है पवन लिमिटेड अपॉइंटेड Mr. VIR, a person resident in India, as a managing director who has taken a charge of the post on 1st June 2022. The remuneration package sanctioned to him is follows: salary 60 lakh, rent free accommodation is 6 lakh, children education allowance is 3 lakh, live travel concession package is 3 lakh, premium in respect of insurance taken for indemnification is 5 lakh. What would be the amount of yearly remuneration for financial year 22 paid by Pawan Limited to VIR, the managing director, who is appointed on 1st June 2022? So it will be 60 lakh 50,000. 60 lakh 50,000 कैसा आया? सैलरी आरए पे है 6 लाख, चिल्ड्रन एजुकेशन है 3 लाख, लिव ट्रेवल है 3 लाख एंड इंडेमनिफिकेशन है 5 लाख. $60 लाख तो सैलरी है बट उसके बाद 50,000 कहाँ है? अच्छा ओनली 50,000 ही है तो आंसर तो हमारा आ रहा है 60 लाख 50,000. कैसे आएगा? 60 लाख तो सैलरी हो गई सपोज, 50,000 कहाँ से आया वो पता नहीं चल रहा है. 50,000 का तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं. So board report of Smart Squeezer and Solution Limited, a listed company having the global presence whose aim is to foster the curiosity and the inquisitiveness through fun and engaging quiz questions for kids, shall include a statement showing the name of certain number of its top employees in terms of remuneration drawn by them in the financial year 21-22. From the following option, choose the one which correctly indicates such a number of top employees. The board report of Smart Quizzes and Solution Limited shall include a statement showing the name of top 10 employees in terms of remuneration drawn by them in the financial year 21-22. उसके बाद आ रहा है हमारा श्री हरि was employed as a manager as a key managerial personnel throughout the financial year 21-22 in a Unique Logistics Limited, a listed company which connects shipper and transporters pan-India carrying and storing any perishable cargo in which of the following situation his name shall be shown in the board's report. If Sri Hari is in receipt of remuneration for the financial year 21-22 not less than, it will be not less than 1 crore and
2 लाख, नॉट लेस देन 1 करोड़ और 2 लाख, ये पहले भी आया था कुछ। सेक्रेटरियल ऑडिट कब करानी पड़ती है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो हर केस में, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, सेक्रेटरियल ऑडिट हमें कब करानी पड़ती है? अगर लिस्टेड कंपनी होती है। अगर when we need to conduct the secretarial ऑडिट हमें कब करानी पड़ती है? अगर लिस्टेड कंपनी होती है तो इन एवरी केस, और पब्लिक लिस्टेड मतलब वो हो जाएगी जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़, बोरिंग greater than equal to 100 करोड़, और ऑल बोरिंग फ्रॉम बैंक और पीएफआई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। तो सेक्रेटरियल ऑडिट कब करानी पड़ती है लिस्टेड कंपनी के केस में? हर टाइम, और पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और ऑल बोरिंग फ्रॉम बैंक और पीएफआई 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। उसके बाद आता है हमारा देन व्हाट विल बी द मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड पावर्स। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर बोलता है अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी व्हिच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर may contribute any amount directly or indirectly to any political party। एक कंपनी जो कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होती है, a company which is other than the government company and a company which has been in existence। अगर एक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो, या फिर जो कि एग्जिस्टेंस में हो फॉर मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर, में कंट्रीब्यूट करेगी एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। एज पर सेक्शन 174 वेयर द इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर, quorum shall be हायर होगी या तो दो नॉन इंटरेस्ट या तो नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट एट सच अ मीटिंग, और 2 डायरेक्टर shall whichever is higher of। तो हम क्या बोलते हैं? एज पर सेक्शन 174 वेयर द इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एज पर सेक्शन 174 जहां पे जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर, quorum shall be higher of। quorum क्या होगी? quorum shall be higher of number of quorum shall be higher of number of non interested director present at such a meeting and 2 director whichever is higher of। So as per section 174 where the interested director is greater than equal to 2/3 of the total strength of director, as per section 174 where the interested director is greater than equal to 2/3 of the total strength of director, then the quorum shall be higher of the number of non interested director or 2 director whichever is higher of। तो as per section 174 क्या बोलता है? What does the section 174 tell us that is where the interested director जो है greater than equal to है, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर, quorum कैसे बनेगी? इट शैल बी द नंबर ऑफ द नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर और द 2 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर। एज पर सेक्शन 188 where the minimum 90% of members in a number are relative of promoter or are related party are not precluded from voting on resolution for approving any related party transaction। As per section 188 where the minimum 90% of members in numbers are relatives of promoter or any related party are not included from voting on resolution for approving any related party transaction। As per section 188 where the minimum 90% of members in number are relative of promoters। As per section 188 हम क्या बोलते हैं कि section 188 क्या बोलता है हमें? सेक्शन 188 बेसिकली ये बोलता है जहां पे मिनिमम 90% ऑफ द मेंबर्स इन नंबर आर रिलेटिव हो प्रमोटर्स के। एज पर सेक्शन 188 जहां पे मिनिमम 90% ऑफ मेंबर्स इन नंबर्स रिलेटिव हो प्रमोटर्स के या फिर रिलेटेड पार्टी के, दे आर नॉट इंक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। उसके बाद फॉर लोन और इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी BMUR इज रिक्वायर्ड, इट इज 100% अप्रूवल फॉर from attended director, so ignore the director who has not attended the meeting। The draft minutes of the meeting shall be circulated among all the director within the 15 days of the meeting, within the 15 days of the meeting। So draft minutes होंगे of the meeting that the same shall be circulated among all the director within 15 days of the meeting, within 15 days of the meeting।
जो ड्राफ्ट मिनट्स होंगे ऑफ द मीटिंग दैट द सेम शैल बी सर्कुलेटेड विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग एज पर सेक्शन 177 omnibus approval can only be given for related party transaction. Omnibus approval shall be valid होगा for 1 year for similar type of transaction requiring the fresh approval after the expiry of 1 year. As per section 177 omnibus approval can only be given दी जाएगी for related party transaction. Omnibus approval shall be valid होगी for 1 year for similar type of transaction that require the fresh approval after the expiry of 1 year. As per section 173 every company shall hold the first BOD meeting within 30 days. हम क्या बोलते हैं as per section 173 every company shall hold करेगी the first BOD meeting within 30 days of the date of incorporation and thereafter hold a minimum number of 4 BOD. As per section 173 every company shall hold करेगी the first BOD within the 30 days on the date of incorporation. Thereafter जो minimum number होगा BOD का that will be the 4 BOD meeting every year in such a manner not more than 120 days shall intervene between the two consecutive meeting of the board. As per section 181 बोलता है the contribution that can be made without the prior approval of shareholder is अगर वो कितना हो that is 5% of the average net profit of the preceding of the last 3-year profit in this maximum limit will be this. अगर सपोज 3 ईयर का प्रॉफिट जो है 210 है फिर 180 है और लॉस है 30 का इसका 5% कितना होगा इट विल बी एवरेज करना होगा पहले तो 210 है 180 है माइनस 30 है एवरेज फिर इसका 5% विल बी दी ₹6 लाख. उसके बाद आ रहा है हमारा एज पर सेक्शन 174 quorum in a meeting. quorum कैसे बनेगी? Quorum in a meeting will be 1/3 of total strength or 2 director. In this case the total number of director is 10. Quorum in a meeting कितनी होगी 1/3 of the total strength or 2 director whichever is higher. तो ये होती है कंपनीज के अकॉर्डिंग quorum कैसे बनती है 1/3 of the total strength or 2 director whichever is higher. Therefore, quorum is met when at least 4 directors attend the meeting at 2 p.m. 4 directors are available DE this, hence the quorum is met. 1/3 of total strength यानी कि 10 यानी कि होगा 4 और 2 तो quorum will be from the 4 director. 1/3 of the total strength यानी कि 10 का 1/3 यानी कि 3.33 तो हम उसे राउंड ऑफ करके 4 कर लेंगे फिर 2 और 4 whichever is higher तो 4 हो जाएगा. तो ये कंपनी तक की quorum होती है. उसके बाद नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी एट लीस्ट 1 BOD इज हेल्ड इन ईच हाफ ऑफ द करंट ईयर और मिनिमम गैप शुड बी 90 days. नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी के केस में क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए मतलब हाफ कैलेंडर ईयर में एक और मिनिमम गैप जो होना चाहिए दैट शुड बी 90 days. कंपनी विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन अगर 3 फाइनेंशियल ईयर से कम में कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है. एज पर सेक्शन 177 विजिल मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल होता है सारी लिस्टेड कंपनी पे. कंपनी जो कि एक्सेप्ट करती डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. कंपनी विच हैव बोरो मनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 crore एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एज पर सेक्शन 177 विजिल मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है. एज पर सेक्शन 177 विजिल मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल होती है लिस्टेड कंपनी पे. कंपनी जो कि एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से. कंपनी जो कि बोरो करती है मनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन एक्सेस ऑफ 50 crore या उससे ज्यादा एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Even after giving intimation for attending the board meeting through video conferencing, a director may attend the future meeting in person. If he gives intimation to attend the board meeting in person sufficiently in advance, अगर बता दे कि उसे फर्दर जो मीटिंग्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं उसे इन पर्सन अटेंड करनी है तो वो बता दे कंपनी को वो ऐसा कर सकता है. एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 नोटिस ऑफ मीटिंग इज टू बी सर्व्ड.
To all the director, additional alternate interested is just to be served even a director who has expressly inability to attend the meeting. As per section 173 subsection 3, notice of meeting जो है that the same is to be served to all the director, additional alternate interested. It is to be served even to director who has expressed the inability to attend the meeting. Total 1400 शेयर होल्डर है, हैविंग कितना है 1,10,00,000 है. ओनली पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 1100 शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल है. होल्डिंग द शेयर्स ऑफ वर्थ 90 lakh attended the meeting on the appointed date. Of this 600 shareholder with shareholding 68 lakh voted in favor of the scheme, whereas remaining 500 shareholders voted for disapproval. The scheme of compromise shall be taken as approved. तो scheme जो है compromise की उसे approve मान दिया जाएगा. Contravention करते हैं provision of companies incorporated on 1st April 2019. Gap between the initial two consecutive board meeting held is this and this is 143 days. So gap next to consecutive board meeting from this and this is 163 days. So रूपाली जो है वन ऑफ द डायरेक्टर है. रूपाली जो है that the same is one of the director of in a super fast vehicle limited. She gave a notice, written notice dated on 10 June in a specified form disclosing her shareholder interest in this limited and caused its disclosure at the board meeting held immediately thereafter on 17 June 2021, from which of the given dates 8 years are to be counted for preserving her notice of disclosure of interest from the end of financial year 2021-22. A public company जो है वो contribute करती है कर सकती है any amount to any political party. Public company जो है वो contribute कर सकती है any amount to any political party. अगर कंपनी 3 साल से ज्यादा की एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट नहीं करती. Every director shall at the first meeting of board in which he participates, director discloses his concern and interest in any company. Section 184 subsection 1. Section 184 subsection 2 shall apply to private limited company with the exception that the interested director may participate in such a meeting after the disclosure of his interest. Jinko Meda Private Limited, having the committed no default in filing its financial statement or annual return, has 6 directors, of which Roshni looks after different kinds of operation, including the sourcing of raw material from other company firm. Recently, she convinced other board members to enter into a loan contract with this for the supply of diverse variety of unstitched clothes worth rupees 90 lakh in the span of next 3 years. However, it was disclosed by her that she was a shareholder of this fine cloth Limited, holding the 5% of its paid-up share capital. The following 4 options, which one is applicable in the given scenario? Despite being interested director, she can still participate in the board meeting in such a contract which Jokta is deliberated upon. Zinco Meda Private Limited, having committed no default in filing its financial statement or annual return, has 6 directors, of which Roshni looks after different kinds of operation, including the sourcing of raw material from other companies firm. Recently, she convinced other board meetings to enter into a long-term contract with this Fine Clothing Limited for the supply of diverse variety of unstitched clothes worth rupees 90 lakh in a span of next 3 years. However, it was disclosed by her that she was a shareholder of this Fine Clothing, holding 5% of its paid share capital. Out of the following 4 options, which one is applicable in the given scenario? तो हम क्या बोलते हैं Despite being interested director, she can still participate in the board meeting in which such a contract with Chopta is deliberated upon. A meeting of the board shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at his address registered with the company, and such a notice shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means. A meeting of the board may be called by giving not less than 7 days notice in writing. However, the meeting may be called at a shorter notice to transact the urgent business, subject to the condition that at least one independent director shall be present at the meeting. A meeting of the board may be called किया जा सकता है by giving not less than 7 days notice in the not less shorter notice, that is of 7 days in a writing. However, at least one independent director होना चाहिए if any shall be present at the meeting. ABC Limited is having 10 director in its board. What shall be the quorum for the meeting? 10 है तो that will be the 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3.33, तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 4 और 2 whichever is है, तो आंसर आ जाएगा 4 डायरेक्टर. एक 1 पर्सन कंपनी है a 1 person company है, that is a small company, dormant company.
एक वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी shall be deemed to be compliant with the provision of section 173 if at least one meeting of the board meeting has been conducted in each half of the calendar year and the gap between the two meeting is not less than 90 days. तो ओपीसी वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, ओपीसी और शहरी को कौन सी थी, सेक्शन 8 होगी, 90 days. In ABC Limited, a resolution by circulation was circulated among the directors. However, some of the directors expressed that the resolution should be decided at the meeting of the board. How many directors are required to put a resolution in board meeting if the number of directors of the company are 50? That is 5 directors. एक वन पर्सन कंपनी है, हम क्या बोलते हैं, in ABC Limited, a resolution by circulation was circulated among the directors. However, some of the directors expressed that the resolution should be decided at the meeting of the board. How many directors are required to put the resolution if the number of directors are company 15 है, तो मेरे हिसाब से इसका 1/3 करेंगे तो 5 डायरेक्टर हो जाएगा. Section 184 subsection 2 requires the specific disclosure of interest from a director if holds more than 2% shareholding of a body corporate with which a contract or arrangement is to be entered into by his company. In the case of Supriya, must be holding the share exceeding 4 lakh in SBSL for being considered as an interested director. Supriya holds shares worth rupees 13,50,000 in the capacity of one director of Paridhi Tours and Travels Limited, whose paid up share capital is 4,50,000. Swikriti Bus Suppliers Limited this with the paid up capital of 2 crore in the business of supplying tourist buses. Being in need of adding 3 more tourist buses in its existing fleet of 10 buses, PTTL through Supriya approached SBSL for the purpose of purchasing the required buses, knowing fully well that Supriya holds certain amount of shares in SBSL, making her an interested director. Requirement out of the following 4 options, which one is applicable in the given situation? Supriya as interested director must be holding the shares exceeding 4 lakh. Withdrawal mechanism क्या होता है? What is withdrawal mechanism? Listed companies, any company which accept deposit from public, any company which has borrowed money from bank and financial institution greater than 50 crore, not applicable to private company. Rita, one of the director है of Lima Supermarts Limited, altered her declaration regarding the shareholding in the Sunhari Supplies Limited, which after the alteration stand 2% in along with the co-director Somesh, it is 2.75%. It so happened that recently the Sunhari Supplies proposed to enter into a supply contract worth rupees 1 crore with the Lima Supermarts, which shall continue for next 2 years. Which of the following option is applicable in the given situation? Rita and Somesh cannot participate in the board meeting in which the supply contract is being discussed. Nilima was an interested director when her company Sagar Supplies Limited entered into a supply contract worth rupees 20 lakh with Srinivas Tubes and Pipes Limited, under which the latter company would supply requisite items for full 1 year to the former company. However, Nilima did not disclose her interest of the time when the BOD of Sagar Supplies Limited, where the issue of supply contract was discussed, and even participated in the discussion. Which of the following option is applicable in the given situation? Since Nilima did not disclose her interest, the contract is voidable at the option of Sagar Suppliers Limited. सुप्रिया होल्ड कर रही है 13,50,000 इन कैपेसिटी ऑफ वन डायरेक्टर ऑफ परिधि ट्यूर्स एंड ट्रेवल, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 4,50,00,000. स्वीकृति बस सप्लायर्स लिमिटेड विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 crore in the business of supplying tourist buses. Being in need of adding 3 more tourist buses in the existing fleet of 10 buses, PTTL through Supriya approached SBSL for the purpose of purchasing the required buses, knowingly fully well that Supriya holds certain amount of shares in SBSL, making her an interested director. Out of the following 4 options, which one is applicable in the given situation? Supriya जो है interested director hold shares of SBL of the value exceed कर रहा है 1 लाख but not exceeding the 1.5 lakh. Supriya, an interested director, holds share of SBSL of the value exceeding 1.5 lakh but not exceeding 2 lakh. None of the above. The answer is none of the above.
In the very first board meeting held in the financial year 22, Prerna, Sandhya, Jai and Rhythm, being director in Star Traders Limited, gave separate notices dated on 15th April 2022 in the specified form disclosing their shareholder interest in different body corporate. Rhythm, also the managing director of the company, wants them to be kept at his residence. Select the suitable option from those stated below where to keep such notice disclosing the interest of director. Such notice shall be kept at the registered office of the company. That shall be at the registered office of the company. Then आता है हमारा inspection, inquiry and investigation. तो ये चैप्टर जो है हम इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे. अभी तक हम इसको एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, बचे हुए चैप्टर को फिर से भी LODR और अदर लॉ वाले चैप्टर्स एक साथ रिकॉर्ड करेंगे.